to our channel Modi Trends. Today we are at Grishneshwar in Aurangabad to visit our 6th Jyotirlinga. The Grishneshwar Temple is situated in the tiny village of Verul in the Aurangabad district. सुषमा वो बड़ी बहन थी, कृष्णा की बड़ी बहन थी। उसकी शादी हुई थी, उसको कुछ दिन बच्चा नहीं हुआ। अच्छा। बच्चा नहीं होने के कारण आजू बाजू के लेडीज लोग उसको तंग करते थे, ये बांझ है, ये ऐसी है, वैसी है। उसको गुस्सा आता था। फिर कुछ दिन ऐसा चलते चलते फिर उसने सोचा एक दिन अपनी छोटी बहन को ब्याह के ला लूँगी घर, छोटी बहन। और वो छोटी कृष्णा वो 101 पिंड बना के यहाँ विसर्जन करती डेली। हाँ, तो फिर कुछ दिन के बाद वो शादी करा ली उसकी। फिर वो दोनों सगे बहना शौकन हो गई। फिर कुछ दिन के बाद वो छोटी वाली को एक लड़का हुआ। फिर वो लड़के को वो बड़ी कृष्णा सुषमा संभालती थी, ये वो सब संभाल लेती थी वो बच्चे को। उसका बालपन नष्ट हुआ। कुछ दिन के बाद वो बच्चा छोटे से बड़ा होते होते बड़ा हो गया। फिर उसकी शादी हो गई। फिर शादी होने के बाद वो कुछ हो गया वो माँ बेटे में। वो बड़ी माँ मतलब सुषमा, तो सुषमा ने उसको नींद में मार डाला, टुकड़े टुकड़े करके इधर फेंक दिया। और उसके माँ को मालूम नहीं, घोषणा को मालूम नहीं था। फिर यहाँ वो अपनी डेली के जैसा वो 101 पिंड बना के यहाँ अर्पण करने आई थी। तो भोलेनाथ यहाँ प्रकट हो गए। और वो प्रकट होने के बाद बोले, देख तेरे बच्चे को तेरे बहन ने मार के फेंक दिया। बोला मेरे को क्या करने का बोला, उसके वजह से ये बच्चा हुआ, उसके वजह से मेरी शादी हुई, उसके वजह से आप प्रकट हुए, मेरे को दर्शन दिए। अब मैं क्या सजा देने वाली, और आप भी सजा मत दो बोली। तो बोले ठीक है, तेरे बहन को माफ़ कर देता भाई, तू मंग। बोले तेरे को क्या चाहिए? तो बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ चीज़ नहीं चाहिए। नहीं तो कुछ तो भी मांग ले। बोले तेरे को मांगना पड़ेगा। तो ठीक है बोले, मेरा नाम तुम्हारे नाम से जुड़ा दो, बस इतना ही मांगती हो। तब से ये घुसनी शुरू हो गई। Reaching Grishneshwar Jyotirling is relatively easy due to its proximity to major cities like Mumbai and Aurangabad. The nearest railway station is Aurangabad railway station, which is about 29 kilometers from Grishneshwar. The nearest airport is Aurangabad Airport, which is about 30 kilometers from Grishneshwar. Regular buses also operate from Aurangabad bus station to Grishneshwar, which is about 30 kilometers. Some interesting facts about Grishneshwar Jyotirlinga. Grishneshwar is also called Gusmeshwar. Men here are required to go bare-chested into the temple. This is the smallest Jyotirling temple in India. The UNESCO heritage site, Ellora Caves, is just less than a kilometer away. The Grishneshwar Temple is renowned for its excellent architectural design and intricate carvings. The temple is constructed in the Hemadpanthi style, which is a blend of Chalukyan and Rashtrakuta architectural influences. It would be best to visit this temple during the winter months between October and March. Visiting this ancient and divine destination during Mahashivratri would be the ultimate treat for any devotee. We hope you enjoyed this video. Join us next time for more such content. Do not forget to like, share and subscribe. जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो